Students, in today's video, I'm going to explain to you hanging drop method or motility method. This method is used for demonstration of flagella. Flagella, as you know, is a locomotory organ which helps bacteria to move from one place to another. And those bacteria which possesses flagella are generally very virulent. They have the capacity of causing illness in a faster way. So if you have to demonstrate the flagella under lab conditions, you have a method called as hanging drop method. For this method, you need certain kind of instruments. One of the most important is slide. Generally, the slide used for hanging drop method is quite different from the general slide. It is a glass slide, but in the center of the slide there is a depression that make it different from other common glass slides. This slide is commonly called as depression slide, or you can call it as concavity slide. But more commonly, you will call it as depression slide because this is different from the normal slide. One end of the slide has a depression in a round form. It has a depression, and that's why it is called as depression slide. This slide is exclusively used for demonstration of flagella in the lab conditions. Another important thing that you need for this method is a cover silk, but preferably you will keep the round cover silk in order to fix it to the slide properly. Another important thing is petroleum jelly. The common petroleum jelly that you apply on your lips, you can use that also. But if you have the crude form of petroleum jelly available in the lab, you can use that also. You need a matchstick. The common matchstick that you generally used for the domestic purpose, you can use that matchstick. And most commonly, you need microscope, because for demonstration you need microscope and you need to visualize it under microscope. And more important is the sample. Keeping all the things at the slab, then you will perform the practical. I'll again repeat, hanging drop method is a method that is generally used to demonstrate flagella. Flagella is a locomotory organ which helps bacteria to move from place to place. It adds to the virulency of bacteria. Those bacteria which possesses flagella are highly virulent because they have the capacity of causing the disease more devastatingly. For this, you need certain kind of instruments at the lab. One of the most common is the slide, but it has a different kind of slide called as depression slide. The slide appears similar to the normal glass slide, but there is a speciality with this slide. And at the center of the slide, it possesses a depression. That is why it's called as depression slide or concavity slide. Agar aapko normally ye na dikhai de, you can feel it by your finger. When you touch the slide, you can see there's a depression in the center. That is why it's called as depression slide or concavity slide. Then you need a cover silk. Depending upon the type of the depression are generally in the round form, so you must prefer the round cover silk so that it will fix properly to the slide. Then you need petroleum jelly. You can use any kind of the petroleum jelly. The one that you apply on your lips, that's also suitable, but if you have a crude form of petroleum jelly available in the lab, you can make use of that also. You need a matchstick or an applicator, a small stick. You need a microscope, and you need the sample, of course. Okay, students, for the procedure, what do you need to do? You have to keep all the things on the slab before performing the practical. You have to keep everything on the slab. Generally, whenever we go for sampling, we generally place the sample over the slide. But in this case, you are not going to place the sample on the slide. You are going to place sample on the cover slip. Okay, place 1 drop of sample on the cover slip. Before placing the sample, take the slide, okay, concavity slide, and apply petroleum jelly over the edges of the concavity. आपको क्या करना है, पहले आपको एप्लीकेटर लेना है और एप्लीकेटर के टिप पे आपको पेट्रोलियम जेली डालनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, एप्लीकेटर स्टिक भी होता है, आप मैच स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू प्लेस पेट्रोलियम जेली, आप पेट्रोलियम जेली को एप्लीकेटर के टॉप के ऊपर रखें. फिर इस पेट्रोलियम जेली को ये जो आपका कनकेविटी स्लाइड है इसके एजेस पे डाल दी.
slowly and carefully without allowing the petroleum jelly to enter to the center. आपने एक एप्लीकेटर लिया, एप्लीकेटर के टिप पे आपने पेट्रोलियम जेली डाला, वो पेट्रोलियम जेली आपने कनकेविटी स्लाइड में जहाँ पर डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन के एजेस पे अप्लाई किया, पर बहुत ध्यान से किया। जो आपका ये पेट्रोलियम जेली है ये सेंटर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब अगर गलती से सेंटर की तरफ चला गया, मेक यूज़ ऑफ अ टिश्यू पेपर, नॉट कॉटन, मेक यूज़ ऑफ अ टिश्यू पेपर टू क्लीन दिस आउट, बिकॉज अगर आप कॉटन का इस्तेमाल करेंगे इट विल लीव सर्टन थ्रेड्स एंड दोज थ्रेड्स कैन produce an artifacts. Similarly, you will apply the petroleum jelly over the cover slip also on the edges very carefully without touching the center. Okay students, then in the next step you will place the sample on the slide. फिर आप sample को slide के ऊपर डाल देंगे। not on the slide, you will place the sample on the cover slip. I will repeat it again. आप पहले पेट्रोलियम जेली को कनकेविटी स्लाइड के एजेस के ऊपर डाल देंगे। सिमिलरली पेट्रोलियम जेली को अप्लाई करेंगे आप कवर स्लिप पे भी। फिर सैंपल को कवर स्लिप के ऊपर डालेंगे, सैंपल को स्लाइड के ऊपर नहीं डालेंगे, सैंपल को कवर स्लिप के ऊपर डालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देन व्हाट यू डू, यू विल टेक अप द स्लाइड एंड प्लेस इट ओवर द कवर स्लिप। आप स्लाइड को ही उठाएंगे, मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिखाया, स्लाइड इधर है, यहाँ पे कवर स्लिप इधर है, आप स्लाइड को उठाएंगे और इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे। जिस साइड से डिप्रेशन है उस साइड को आप कवर स्लिप के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। यू विल प्लेस इट ओवर, यू विल प्लेस द स्लाइड ओवर द कवर स्लिप। हल्के हल्के से इसको प्रेस करेंगे ताकि कवर स्लिप और स्लाइड आपस में फिक्स हो जाए। ओके स्टूडेंट, देन व्हाट यू डू, यू विल टर्न इट अपसाइड्स डाउन क्विकली, but the procedures should be quick. वार वार करूँगे, you need to quickly turn it upside down. upside down करने की वजह से क्या होगा, आपको जो ये ड्रॉप होगा, सैंपल का ड्रॉप, ये हैंग हो जाएगा, ना ये ऊपर रहेगा ना ये नीचे, क्योंकि नीचे डिप्रेशन है और ये हैंग हो जाएगा। इसी वजह से इस मेथड को हम हैंगिंग ड्रॉप कहते हैं। दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज हैंगिंग ड्रॉप मेथड। सो आप क्या करेंगे, क्विकली इसको अपसाइड डाउन करेंगे, टर्न करेंगे क्विकली, एंड देन यू विल ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद आप माइक्रोस्कोप में अगर आपको ब्राउनियन मूवमेंट्स दिख रहे कि इट अगर तो बासान माइक्रोस्कोपस मज कि ब्राउनियन मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। अगर ये ब्राउनियन मूवमेंट आपको दिख रही है, आपको ऐसे लग रहा है, दैट इंडिकेट्स द सैंपल इज पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। अगर उसके पास फ्लैजिला है तभी ब्राउनियन मूवमेंट होगी, और अगर फ्लैजिला नहीं है देन देयर विल बी लाइक दिस, ऐसे करके स्ट्रेट मूवमेंट होगा। दिस इंडिकेट्स द नेगेटिव टेस्ट एंड दिस ब्राउनियन मूवमेंट विल इंडिकेट्स द पॉजिटिव टेस्ट। आई होप इट्स क्लियर। मैं फिर भी एक और बार रिपीट करूँगी। हैंगिंग ड्रॉप मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लैजिला। अगर हमें देखना हो ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको चाहिए एक डिप्रेशन स्लाइड भी नॉर्मल स्लाइड जैसा ही दिखता है, मगर इसमें डिप्रेशन होता है, बीच में थोड़ा वो डिप्रेशन होता है। इसे डिप्रेशन स्लाइड भी बोलते हैं, कनकेविटी स्लाइड भी बोलते हैं। और चाहिए आपको स्लाइड, आपको चाहिए कवर स्लिप, आपको चाहिए पेट्रोलियम जेली, आपको चाहिए मैच स्टिक या एप्लीकेटर, माइक्रोस्कोप और सैंपल। आपको केयरफुली पहले पेट्रोलियम जेली को स्लाइड के एजेस पे लगाना है। सिमिलरली आपको कवर स्लिप के भी एजेस पे लगाना है। ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम जेली सेंटर की तरफ ना जाए। उसके बाद सैंपल को उठा के कवर स्लिप पे डालना है, स्लाइड पे नहीं, ठीक है जी, कवर स्लिप पे डालना है। फिर स्लाइड को उठा के कवर स्लिप के ऊपर फिक्स करना है, ठीक है। जिस साइड से पेट्रोलियम जेली लगा है उसी साइड को कवर स्लिप के ऊपर लगाना है और फिक्स करना है। फिर एकदम से अपसाइड्स डाउन करना है, एकदम से टर्न करना है, क्विकली टर्न्स अपसाइड डाउन। और उसके बाद एकदम से माइक्रोस्कोप में देखो। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, अगर आपको ऐसे मूवमेंट्स दिखेंगे विच यू कॉल्ड एज अ ब्राउनियन मूवमेंट, देन द पेशेंट सैंपल इज पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। और अगर नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो आपका जो सैंपल है that is negative. For any kind of queries you can message me on my WhatsApp number. Thank you.